Hello 10 standard. Welcome to SS lecture. Today we are going to continue with the chapter 10 and I'll start with beverages, right? The crops which come under beverages are tea, coffee, cocoa. Now let us study about tea, right? I told you that day also कि in these topics you should know the zone in which this plant grows, the temperature, the climatic conditions, the rainfall, the soil, and the states and the main characteristics of this crop, right? If you make a table, we have already made table, right? So if you make a table, that in that way you will be able to learn in a better way. Tea. Now tea is grown. Tea is a plantation crop, right? And what is it is grown in both tropical as well as temperate zone. Tea is grown in both the zones, tropical as well as temperate zone, right? Now the tea leaf and its tender sprouts are processed and its powder and small leaves are used in drinks. That day also I told you कि जब हम बात करते हैं टी प्लांट की तो टी को देखो, यू कैन सी द पिक्चर, राइट? टी प्लांटेशन क्या होता है, उसको लीव्स के साथ पिक किया जाता है ना? और जब हम पिक करते हैं उसके बाद जो है उसका पाउडर या ग्रैन्यूल बनता है विच इज यूज फॉर ड्रिंक्स, ठीक है? India produces maximum tea after China, Sri Lanka. China and India are leading tea exporters. Slopy lands where water easily flows down, good iron content, 20 degree to 30 degrees Celsius temperature and about 200 centimeter of rainfall coming in the form of showers throughout the year are favorable condition for tea plantation. So the tea requires how much rainfall? 200 centimeter. Temperature 20 to 30 degrees Celsius. It is said tea is grown on the slopy downland. क्योंकि जो पानी होता है ना, stagnant water जो होता है, it spoils the tea plant, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर अगर हम टी लीव्स को ग्रो करेंगे तो यहाँ पर जो पानी होगा, स्टैग्नेंट वाटर, खड़ा हुआ पानी, वो टी लीव्स को, टी के प्लांट को खराब कर देगा. सो टी इज ऑलवेज ग्रोन ऑन द slopy region so that the water flows down, right? That is why it is said slopy land where water easily flows down is very good for tea plantation, right? Then the states. Tea grows more in Assam, West Bengal, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka. Assam, West Bengal produce 75% of the tea of the nation. The tea leaves are very skillfully plucked from the plants. एक पूरा ऐसा बहुत skillfully दो leaves हो, बीच में जो उसका flower होता है, right? उस तरह बहुत meticulously उसको pluck किया जाता है. Now comes coffee. Coffee is reared over the slopes of mountains in the shades of large trees in such a way that no direct rays of the sunlight falls on the coffee leaves. You can see this picture, right? Coffee जो है वो again mountains की slopes पे जो है वो grow होती है. It is reared over there. और जहाँ पर कॉफी की प्लांट्स होते हैं, राइट, उसके चारों तरफ आगे, राइट, बड़े बड़े ट्रीज को लगा दिया जाता है ना. द लार्जर ट्रीज आर ग्रोन ओवर देयर. व्हाई? बिकॉज डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इट स्पॉइल्स द कॉफी बीन्स. ठीक है, कॉफी की लीव्स को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन नहीं पड़नी चाहिए. इसीलिए जहां पर भी कॉफी रेयर होती है उसके चारों तरफ बड़े से लार्ज ट्रीज को ग्रो किया जाता है so that direct rays of the sun do not fall on the coffee leaves. Rainfall कितना चाहिए कॉफी को? The coffee crop needs 150 to 200 centimeter rainfall. Temperature 15 to 28 degrees Celsius temperature. Slopy mountain land. ठीक है? And the states, coffee is grown abundance in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.
Kurg area of Karnataka. Which area of Karnataka? Kurg area of Karnataka is well-known region for coffee plantation. Coffee seeds are extracted out of the nuts, grinded, and then it is used as a drink. Right? Now comes cocoa. Cocoa is prepared out of the seeds of the cocoa fruit. Cocoa is a beverager. Beverager मैंने क्या बताया आपको? It is a soothing drink. Chocolate is prepared from cocoa. Climate कैसा है? It requires hot and humid climate and excessive rainfall. African countries are its major producers. Cocoa production is on increase in Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu states. ठीक है? Now we'll move towards the cash. Now let us move towards the cash crops. And in cash crops, first we'll do cotton. Cotton is a kharif crop. Underline that. Again, ये chart में आपको यो table जो बनाया है उसमें लिखना है. Cotton holds an important place as a cash crop in Gujarat and in India. At world level, India is at second place in the production and usage and export of cotton. Cotton without seeds is obtained from cotton plant. This cotton is known as white gold in India. What it is known as? It is known as white gold in India. Besides the cotton seeds, oil is used to prepare eatable oils and its seeds and oil cakes are used as animal food. Right? मतलब ईटेबल ऑयल्स के अलावा मतलब जो ऑयल केक उसके जो सीड्स होते हैं राइट और ऑयल केक मतलब जो भी लेफ्ट ओवर जो चीजें हैं वो एनिमल फूड के लिए यूज होता है. विच सॉइल इज यूज्ड इन कॉटन? ब्लैक लावा सॉइल. विच सॉइल इज यूज्ड? ब्लैक लावा सॉइल. इसीलिए ब्लैक लावा सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है. राइट? ब्लैक लावा सॉइल. व्हाई? बिकॉज ये ब्लैक लावा सॉइल हैज it has the quality to retain moisture. ब्लैक लावा सॉइल जो होता है उसके पास क्वालिटी है टू रिटेन मॉइस्चर. वो पानी को चूस लेता है. राइट? इट हैज द क्वालिटी टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर टाइम, which can retain humidity for a longer time. Soil with plenty of mineral contents, hot and humid climate. Temperature कौन सा? 20 to 35 degree Celsius temperature. Rainfall कितना? 30 to 70 centimeter of rainfall. All these are favorable condition for cotton. ठीक है? Rainfall कितना? 30 to 70 centimeter. Temperature 20 to 35 degree Celsius. Temperature. Soil कौन सा? Black lava soil. Why? Because it has the capacity to retain moisture for a longer time. ठीक है? Then cotton is also called as a white gold in India. Now let us see कि कहाँ पर ये grow होता है. लेकिन before that, the growing season for cotton is about 6 to 8 months, and frost damages the cotton crop. कॉटन क्रॉप के ऊपर वो जो फ्रॉस्ट अगर जमा हो जाता है ना तो वो क्या करेगा? कॉटन को डैमेज कर देगा. राइट? और स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर ये प्रोड्यूस हो रहा है कॉटन? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा. ठीक है? एज द फार्मर्स ऑफ गुजरात हैव एक्सेप्टेड BT cotton seeds. Gujarat stands first in India in area sown, productivity, total production and quality of cotton. Cotton is grown more in Gujarat. Cotton is grown more in Surendranagar, Rajkot, Vadodara, Ahmedabad, Sabarkantha, Mehsana, Bharuch, Kheda, Surat, Panchmahal, Amreli, Bhavnagar, Patan, Junagadh, Jamnagar district. Right? These are the places of Gujarat where cotton is grown. Now let us move towards sugarcane. Sugarcane, it is a major crop of India. Maximum sugarcane is grown in India and the world. Right? Production
उसका जो सॉइल जो है, विच सॉइल इज यूज, ब्लैक फर्टाइल एलुवियल लावा सॉइल इज यूज्ड, और क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, rainfall 75 to 100 centimeter of rainfall is required, and state UP is at the top in area zone. सबसे ज्यादा कहाँ पर ग्रो होता है? यूपी में, बट महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन. गुजरात में साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर शुगर केन इन गुजरात. Now comes jute. India produces maximum of jute in the world. The jute fiber is also called golden fiber. What it is called? Golden fiber. क्या बनता है जूट से? जूट क्लॉथ, गनी बैग्स. गनी बैग्स का मतलब बोरे, बोरी होती है ना, है ना. मैट्रेसेस, रोप्स, बैग्स, फुटवेयर्स, handicrafts items are made from jute. India has a strong competition from Bangladesh with regards to cheap labor in just industry. Jute requires, now let us see the climatic conditions. Jute requires fertile soil of delta region where new sediment is deposited every year. Right? मतलब उनको कैसा soil चाहिए? New sediment. Right? जैसे alluvial soil का it is divided into two ना, बंगर and खद्दर. Right? तो खद्दर क्या होता है? New sediment होता है, new collected soil. और climate कैसा? Hot and humid climate. Temperature 30 to 40 degree Celsius temperature. Rainfall kitna? 100 centimeter of rainfall. And jute is grown where? It is more grown in Ganga Delta, in in West Bengal, Assam, Bihar, Orissa and UP. ठीक है? Now comes tobacco. Tobacco is a kharif crop. Soil कौन सा यूज होता है? Sandy loamy. टेम्परेचर कौन सा? 20 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल कितना? 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. राइट. एंड soil is determining factor than climate for tobacco cultivation. Major 4 countries in the world which grow and export tobacco are China, Brazil, India and USA. गुजरात में कौन कौन सी स्टेट, गुजरात इंडिया में कौन कौन से? गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका आर मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग टोबैको इन इंडिया. आप लोगों ने गुजरात में देखा होगा ये चारोतर रीजन है ना, चारोतर रीजन ऑफ खेड़ा एंड आनंद डिस्ट्रिक्ट, महसाना, वडोदरा, पंचमहल, they grow more tobacco. About 80% of बीड़ी tobacco of India is produced in Gujarat. Tobacco is used to make gutka, bidi, cigarettes, snuff, etc. Tobacco consumption is harmful to health. Sikkim is the first state to ban tobacco, gutka. We should never intake tobacco. Rubber. अब अगेन रबर जो है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है, स्पेशली मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना कि टी को हम कैसे पिक करते हैं, राइट. तो उसी तरह ही रबर को भी जो है, मतलब वो लोग ऐसे, हम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है कि ट्री पे वो लोग है ना एक कैन बांध देते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, और एक एंगल में वो कट कर देते हैं द बार्क ऑफ द ट्री, और वो जो स्टिकी glue type latex, right, that is collected in the tin. पढ़ा है ना हम लोगों ने. So rubber is prepared out of the milk oozing out of the latex tree. ठीक है. Acetic acid is mixed with the milk collected from the rubber plantation. Then it is heated on low temperature to obtain rubber. ठीक है. कैसे बनता है रबर? पहले तो वो जो लेटेक्स ट्री से जो मिल्क ओजिंग आउट जो निकलता है उसको कलेक्ट किया जाता है, एसिटिक एसिड इज एडेड टू इट, एंड आफ्टर दैट मिक्सचर इज हीटेड ऑन अ लो टेम्परेचर और फिर रबर बनता है. इट इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टायर्स, ट्यूब्स एटसेट्रा. रबर प्लांटेशन इज कैरीड आउट इन द रीजन्स ऑफ कौन सा क्लाइमेट? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. रेनफॉल कैसा चाहिए? हैवी रेनफॉल.
Malaysia ranks first in the world in rubber production. In India, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Assam, Tripura are rubber producing states. Now, medicinal condiments and spices. Gujarat ranks first in the production of cumin seeds, fennel seeds, isabgol in the world, right? Jeera, saunf, right? Besides this, India leads in the production of export of dried coriander, fenugreek, mustard, suva, ajwain. India contributes about 35% in the total world production of condiments. India black pepper, cinnamon, cloves are in high demand in the country and the world. I hope you remember हमने 9th में भी history पढ़ी थी. तो ये जो invaders थे, they actually came, they were attracted towards India for the spices, है ना? In the world, ashwagandha, tulsi, karyatu, mindi, aval, white muesli, madhunashni, ashok, karmal, lindi, pepper, kalo, aloe vera, all these are the medicinal plants. Mint, menthol, palm rose, lemongrass are included as flavored crops. I think अभी अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आई थिंक बहुत सारे लोग ये सब ले रहे होंगे. अश्वगंधा है, गालो है ना, सुदर्शन है, मतलब ये सारी चीजें आप सब लोग ले रहे होंगे. तो ऑल दीज मेडिसिन जो है they are good and they are well produced in India. Fruits, vegetables and flowers. In fruit production, India ranks second after China. Fruits like banana, mango, apple, grapes, naspati, orange, etc. are grown in India. Bananas are grown in Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra. Apples in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, and grapes in Uttarakhand, Maharashtra, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Punjab, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. As the grape production is less than its demand, it is imported from Afghanistan, Pakistan, and Australia. Besides, various vegetables are grown, like flowers like rose, jew, mogra, Kalgota, etc., are also cultivated. Thus, various crops are grown in India.